Assalamu alaikum. My name is Dr. Umair Riaz. My talk station today is slit skin smear. We'll divide it into three portions. Number one is consent. The next step is procedure, and the third step is staining technique for leprosy, that is modified ZN staining. We'll start with the consent. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर उमैर रियाज है. मेरा ताल्लुक़ शोबे जिल्द से है. आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हैं? क्या आप किसी और को अपने साथ इस वक्त बुलाना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको जो मैं प्रोसीजर करने वाला हूँ उसके बारे में बताऊँगा. मैं आपके मर्ज़ की तशख़ीस के लिए आपके जिस्म के चंद हिस्सों से, जैसे कि जहाँ पर ज़ख्म है, कानों, कोहनी और घुटनों से एक ब्लेड की मदद से थोड़ा सा मवाद लूँगा और उसे स्लाइड पर डाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँगा, जिससे आपकी मर्ज़ की तशख़ीस में और आपके इलाज में आसानी होगी. इस दौरान आपको सिर्फ मामूली से कट की तकलीफ़ होगी और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. इस प्रोसीजर के बाद आपको दर्द ना हो, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आपको दर्द की दवाई दूंगा. उम्मीद है आप इसके दौरान, प्रोसीजर के दौरान ताउन करेंगे. क्या आपकी इजाज़त है? After greeting and informed consent, I'll take a glass slide and will wrap tape on the edge of glass slide to endorse particulars of the patient, that is age, sex and name of the patient along with date, and will put the glass slide aside. I'll get a 15 number blade, alcohol swab, gauze piece and surgical gloves. I'll wear gloves and hold patient's lesion site, that in my case is left elbow, between thumb and index finger of my left hand firmly to an extent that the lesion gets blanched, and with my right hand holding 15 number blade, I'll make 3 mm deep and 5 mm long incision. I'll turn blade at right angle to my line of incision and will scrape to obtain the fluid. Ideally, it should be blood free. I'll make a smear of collected fluid on the glass slide on which particulars were already mentioned in a circular manner, starting from periphery and ending in the center. I'll remove the gloves and thank the patient. The next step is staining technique for leprosy, that is modified ZN staining. First I'll air dry the slide, then I'll put 1% carbolfuchsin, that is the red dye, and primary stain, and heat it gently on the burner and keep it aside for 15 minutes. In the next step, I'll put 5% sulfuric acid or 1% HCl, that is modified ZN staining, and acts as a decolorizer for 3 to 5 seconds, and then wash the slide with running water. In the next step, I'll cover the slide with 1% methylene blue, that is a counter stain, for 10 seconds, and then wash it with running water and allow it to air dry. Finally, I'll examine the slide under the microscope and scanner 10x and 40x. Few things I missed in my voice note are: we have to take samples from all the sides, that are both ears, elbows and knees. We have to discard the blades in sharp disposal, and we have to hold the area from where sample was taken with the help of some gauze piece, so that there is no bleeding from the area from where sample was taken. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. जो मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग हम करते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री की, उसकी थोड़ी सी साइंस ये है कि इसमें फर्स्ट स्टेप में हम प्राइमरी डाई डालते हैं, कार्बोफुस्किन डालते हैं. जो प्राइमरी स्टेन है उससे जो स्लाइड के ऊपर सारे स्लाइड है वो पिंक हो जाती है, इंक्लूडिंग द एरिया जहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं. डीकलराइजिंग इसे डालते हैं जो मॉडिफाइड जेडन है, दैट इज़ 5% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% HCl. टीबी के केस में दैट इज़ 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 5% HCl, लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, दैट इज़ 5% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% HCl, इसलिए इसे हम मॉडिफाइड जेडन कहते हैं. तो इसके डालने से जो स्लाइड पिंक हुई हुई है वो सारी वाइट हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम एरिया वो जहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री पड़े हैं, क्योंकि उनके वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड है और वो इस सल्फ्यूरिक एसिड या HCl को एंटर नहीं होने देता, और इस वजह से वो जगह
वाइट नहीं होगी और वो पिंक ही रहेगी। लास्ट स्टेप में हम काउंटर स्ट्रेन डालते हैं। काउंटर स्ट्रेन का इफ़ेक्ट ये है कि जो स्लाइड वाइट हो गई थी, जो माइकोबैक्टीरिया के अलावा जो बाकी जगह वाइट हो गई थी, उसको देखना माइक्रोस्कोप में इतना इजी नहीं है। तो काउंटर स्टेन जब हम डालते हैं तो वो स्लाइड ज़रा ब्लू हो जाती है और उनके बैकग्राउंड में माइकोबैक्टीरियम लेप्री को देखना आसान है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ काउंटर स्टेनिंग, एंड दैट इज़ अबाउट मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग।